So this is the question number 10 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, a string has been given to you which is as value hello, and it has been asked which of the following statements give us error. So first of all, let me write down the content HELLNO. Let me do the indexing for this one. 0 1 2 3 and 4. तो फर्स्ट ऑप्शन से प्रिंट S1 ऑफ 4, तो S1 ऑफ 4 पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका O प्रिंट हो जाएगा सिंपली. ओके, नाउ इट इज सेइंग S2 इक्वल्स टू S1. अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एन एग्जांपल एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर है पूरा डाटा आपका, लेट्स से 0x19 पे एग्जांपल के लिए. तो अब क्या हो रहा होगा, इस मेमोरी एड्रेस को S1 एक्सेस कर रहा होगा. सिमिलरली व्हेन यू यूज S2 इक्वल्स टू S1, इस केस में क्या होगा, S2 भी अब सिमिलर मेथड को यूज कर रहा होगा. यानी दोनों ही डाटा टाइप क्या कर रहे हैं, दोनों ही वेरिएबल क्या कर रहे हैं, सेम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन. ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है. नाउ ऑप्शन नंबर सी S1 इक्वल्स टू S1 ऑफ 4, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन, S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी S1 ऑफ 4 विच इज O इन दिस केस. Okay. Now option number D क्या है, S1 equals to Y. This is the incorrect one. Why? What you are trying to do? You are trying to replace जो O है आपका, S1 of 4 क्या है आपका O, उसकी जगह क्या चाह रहे हो आप, Y चाह रहे हो, which is not possible in the case of string because string is your immutable data type. तो string क्या है आपकी, immutable data type है. That's why we are not able to change any data of the string. तो string के अंदर आप कोई डाटा चेंज नहीं कर सकते. So for this question, option number D is the correct one. Okay. Now there is a practice question for you. Take a note of this one. In order to answer this one, you need to be aware regarding the operations that are possible in string. तो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंकैटिनेशन, ओके, देन रिपीटिशन, membership, and then slicing. So if in order to answer this practice question, you need to be aware regarding these four operations. Okay, then you will be able to answer this one. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this question, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.